आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है, पर कैसे? हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे बस चलेगा, हमें कौन सा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है। पर अगर तेल नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में, रोजमर्रा के हर काम में। नुकसान समझ लिए ना, बस हो गया काम आसान। अब लगाइए दिमाग को काम पे। अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए, और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए, और ऊपर से सैलेड दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए, और कुछ दिन बाद समझ गया ना। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. नमस्कार, हम बात कर रहे हैं देश का आहार और विचार दोनों को बदलने की, और इसी के साथ बदलेगी भारत की तस्वीर। जी हाँ, फूड रेगुलेटरी बॉडी की ओर से आज रिलीज हुई है EAT-Lancet रिपोर्ट। जी हाँ, एक नई ऊर्जा, एक नई कोशिश और एक नई उम्मीद FSSAI की ओर से। We would like to applaud the efforts of the FSSAI in promoting new initiatives and changing the nutritional landscape of our country. We have with us some eminent guests today. नमस्कार, आज बात भारत में आहार की बदलती तस्वीर की। आज रिलीज हुई है EAT-Lancet रिपोर्ट 2018 और हम मिल रहे हैं FSSAI के CEO पवन अग्रवाल जी से। बहुत स्वागत आपका सर। And as the transformer of this change and leading this great movement of the food regulatory body of India, how do you look at the EAT-Lancet report? This is a very powerful document on public health because it brings together issues of food, health, agriculture and climate change on one platform and provides a solutions framework to address these issues on a long-term basis in the global context. So I think it is extremely useful for India because India is soon going to be the most populated country in the world, and that too with a land area of 1/3 that of China, which will be the second largest and most populated country. So I think the challenges of food availability of good food, land mass, keeping our ecology and environment safe, these are huge challenges that India is going to face in coming decades. बिल्कुल आपने सही कहा, मुश्किल भी है, चुनौतीपूर्ण काम भी है, मगर FSSAI has been pioneering this change with food. आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि हम कभी नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या सही खा भी रहे हैं। तो वो सवाल और बिंदु तो लगते हैं, वो अंकुश तो लगता है। मगर यहाँ मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपने काफ़ी कुछ हेल्दी डाइट्स पे कहा है और अनहेल्दी और हेल्दी डाइट्स में थोड़ा सा हमें समझाइए फ़र्क क्या है। देखिए, पहले हम जब डाइट्स की बातें करते थे उसमें कैलोरी के ऊपर फोकस रहता था और कुछ थोड़ा प्रोटीन के ऊपर फोकस रहता था। तो अभी कैलोरी और प्रोटीन से हटकर
अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी फोकस आ गया है। बहुत से ऐसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है हमारी ग्रोथ के लिए, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमें बीमारी हो सकती है और हम फुल्ली प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक फोर्टिफिकेशन स्ट्रेटजी है, बायो फोर्टिफिकेशन है, और जो आप खाना खा रहे हैं वो संतुलित हो, उसमें सब तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, उसकी ज़रूरत है। अनहेल्दी फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कम मात्रा में खाएं, जैसे चीनी हो गया है, नमक हो गया है, या जो फैट है और पर्टिकुलरली जो ट्रांस फैट है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें, तो वो अनहेल्दी फूड हो गया है। और उसको या तो मॉडरेशन में खाया जाए या जहाँ तक संभव है उसको एलिमिनेट किया जाए अपनी डाइट से। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है, आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। आपने एक मुहिम सी चला दी है चीनी कम और थोड़ा कम में, जो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। मगर यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर, हाउ डू यू रीच आउट टू दोज मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन स्कूल? जैसे स्वच्छता अभियान ने उनको छू लिया है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ गई है, सो कैन दिस काइंड ऑफ मूव टुवर्ड्स कैफेटेरियाज इन स्कूल्स एंड क्रिएट दैट हेल्दी ईटिंग हैबिट? देखिए, उसके लिए हमने एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है, और इस मूवमेंट के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट होम, उसमें पिंक बुक है जो एक तरह की उसकी रिसोर्स बुक है। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट स्कूल, उसमें उसकी रिसोर्स बुक येलो बुक्स हैं। फिर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस, उसमें एक ऑरेंज बुक है एज ए रिसोर्स बुक। तो वर्क प्लेस में, स्कूल्स में, घरों में आप साफ़ सुथरा और स्वस्थ खाना कैसे खाएंगे और कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से सम्मिलित हो जाए कि उनको पता भी ना लगे कि उनको सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बताया जा रहा है। ये लाइफ चेंजिंग सबकी लाइफ्स में हमें उसको इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल। आपने एक और आंदोलन चलाया है विच इज विद स्ट्रीट वेंडर्स, और एक बहुत अच्छा प्रयास भोग का भी किया है आपने, जो मंदिर में या गुरुद्वारे में या चर्च में दिए वाले खाने के लिए हुआ है। थोड़ा सा उस पर भी देखिए, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स, वहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है, और कम से कम उसका परसेप्शन है कि जो स्ट्रीट फूड वाला है वो हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक क्लस्टर ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लेकर वहाँ पर इंटरवेंशन करने का एक जरिया शुरू किया है। और उस क्लस्टर में पहले तो वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसका ऑडिट होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और जो कमियाँ होती हैं, अगर कोई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, वहाँ पर ठीक से गार्बेज डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, या लाइटिंग ठीक नहीं है, पेमेंट्स ठीक नहीं है, धूल मिट्टी है, तो वो कमियां पहले दूर की जाएंगी। लोकल बॉडी उसको करेगी या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ करेंगी उसको। इसके अलावा जो इंडिविजुअल कार्ड्स में अगर कुछ कमी है उसको दूर की जाएगी, और बाद में जब ये ऑडिट करके देखा जाता है कि वहाँ लगभग सब कुछ ठीक है, तो उसको एक खिताब दिया जाता है क्लीन स्ट्रीट फूड हब का। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब का जब खिताब दिया जाता है और उसकी पब्लिसिटी होती है, तो वहाँ पर
देखा गया है कि ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं, तो उनसे जो हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उनका फ़ायदा होता है और उनको एक दिलचस्पी होती है कि मुझे भी अपनी जगह साफ़ सुथरी रखनी है और ठीक से खाना बनाना। Every state in India has its own famous food street, which showcases its local cuisines and is popular amongst all sections of society. However, street food is often perceived as unhygienic and a major health risk. To address this issue, FSSAI launched Project Clean Street Food Hub. With the support of state government bodies, FSSAI has framed benchmarks for hygienic and sanitary conditions. Those streets which meet the specified benchmarks will be declared as a clean street food hub. Under this initiative, India got its first clean street food hub, Kankaria Lake. Awarded by the CEO FSSAI on 4th of September 2018. Kankaria, a landmark in Ahmedabad, has around 66 street food vendors that serve popular street food to approximately 1.2 crore people each year. लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी क्या विजन स्टेटमेंट रहेगी आपकी और अगले कुछ कैसे इनिशिएटिव्स हैं जो FSSAI लेने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। देखिए ये जो EAT-Lancet रिपोर्ट है उसमें उन्होंने हेल्दी डाइट की बात कही है कि सारे जो हमारे सिटीजन्स हो वो डाइट उपलब्ध हो और वो वॉलंटरली उस हेल्दी डाइट को चूज़ करें। अगर हम हेल्दी डाइट में सेफ डाइट इंक्लूडेड है, अगर हम ये कर पाते हैं तो मेरे लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। And on that pragmatic note, more power to you and more power to FSSAI. Let's all engage in Eat India and eat it right. Healthy food solutions for all. नमस्कार, हम बात कर रहे हैं देश का आहार और विचार दोनों को बदलने की। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर चंद्रिका बहादुर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी आप EAT-Lancet रिपोर्ट के बारे में? So I think the EAT-Lancet report is an extremely important report for many reasons. And I want to focus on 2 or 3 main reasons. The first is this is the first time that we have a global report that is talking about 2 different things. One, it's talking about how important it is to eat healthy and what are the food groups and in what quantities those food groups should be consumed for a healthy life. So that is one. The second, at the same time, the report is talking about how we have to produce food that is environmentally sustainable. So both in terms of global warming, but also in terms of how we are destroying our oceans, our biodiversity, putting in excess nitrogen and phosphorus into the soil. For all of these issues and how we are overusing cropland, for all these issues, it describes what is the ideal diet. So both of these issues of health of our individual bodies, issues of health of the environment are being dealt with at the same time. And for the first time, it is giving us what is an evidence-based, globally relevant reference diet, which is what kind of quantities of different food groups we should consume. And the nice thing about this report is that it stops there. So what it then does is it leaves it to us as individual countries to decide how we are going to design our own diets, which is in keeping with this globally referenced diet without telling us what to eat. So I think for both these reasons, this is an extremely important report. बिल्कुल जैसे आपने कहा, Eat Right India is a very important campaign. आपकी समझ में FSSAI क्या steps ले रहा है in transforming the nutritional landscape of India? I think actually FSSAI is already doing a lot. तो ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अभी से, और जो रिपोर्ट ने किया है वो एक वैलिडेशन दिया है FSSAI के कैंपेन को और डिस्क्राइब किया है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आज हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने की हमारे देश में और हेल्दी फूड्स को प्रमोट करने की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको ज़्यादा तेज़ी से करना ज़रूरी है। बिल्कुल, once the awareness comes in and the dialogue sets in, change is bound to happen. On that note, many thanks for joining us. Shukriya. Thank you. We're very happy today to have with us Dr. Nafeez Mia, the IRRI representative for South Asia. Welcome. Thank you.
Dr. Nafees, you've done such a lot of work on rice and rice fortification and research on rice. How do you look at sustainable agriculture? Well, sustainable intensification is very much the name of the game now. What India needs and what South Asia needs is that with increasing populations, with increasing demand for food, that the amount of food increases, so the production increases. However, after what we've heard today from the EAT-Lancet report, is that we have to do it, and we recognize this for a long time, in a way that is sustainable. That means that living within those planetary boundaries that are set out in the report, addressing the issues of greenhouse gas emissions. How do we increase production of rice systems without increasing greenhouse gas emissions? How do we increase productivity without increasing nitrogen fertilizer use or optimizing it in phosphorus use and pesticides and other chemical inputs? Now that will have benefit. That will have benefits not more than just in terms of the environmental benefits and the health benefits for consumers, but also importantly for farmers who are growing these crops, because it means that their cost input would go down. So it has a double benefit, both to the farmer and to the consumer. Absolutely. But if you look at malnutrition in various parts of South Asia, it is prevalent. So how do you ensure that rice, that is the staple diet of millions across this global connect, how is it that rice can be made more nutritious to reach out to these masses? Well, rice is the staple diet of South Asia, without any question. It has a cultural role like no other cereal crop in the region. Having said that, rice as part of a balanced diet that provides all the micronutrients that you need is where we think the population should be going. So increasing as part of a rice-based diet, because we don't think that will change, but increasing vegetable consumption, pulse consumption, and other food group consumption to an extent. One of the things that was in the EAT-Lancet Commission was that in all these food categories, India consumes lower than what is expected, the reference diet. So there is room for expansion in these other categories. The other way that rice consumption can meet the needs of consumers is through fortification. Now, there are two ways of doing this. The first way is by adding the micronutrients, whether it be iron or zinc, to the rice. And indeed, under the Poshan Abhiyan, I understand that the government is going to be adding that to the public distribution system. And that's a quick and an effective way of addressing some of the micronutrient needs. The other way of doing it is selecting and growing varieties which are naturally high in zinc and iron. And of course, India is fortunate, thousands of rice varieties available. Some of the traditional heirloom varieties, the black rices, the Kala Namak from eastern UP, for example, the red rices from Assam, many thousands have naturally elevated levels of micronutrients, and we should be selecting for those and seeing to what extent we can encourage or increase consumption of those kinds of rice varieties. Yes, absolutely. And thank you so much for engaging in healthy solutions for 1 billion plus Indians. Thank you. Thank you. We're very happy and delighted today to have with us Dr. Lawrence Haddad, who is the proud recipient of the World Food Prize 2018 for his monumental efforts at reaching out to millions of people. Many thanks for joining us, sir, and congratulations. Thank you, great to be here. Firstly, how did you feel when you got the award? Well, obviously I felt really pleased, but I was very pleased for nutrition, because the committee that awards the prize is predominantly a food-based
committee, and so for them to recognize achievements of myself and David Nabarro, who is the other winner of the prize, in the field of nutrition was a big deal, because it signified that the world is recognizing that food is not just about feeding people, it's also about nourishing people. It also validated in more ways than one your efforts to reach out to these million plus people from the year 2010 to 2017. So that 10-year... Sure, I mean, the committee was very kind to attribute that number to myself and David Nabarro, but in reality we worked with thousands and thousands of people over that 10-year period to influence a whole range of people who have a lot of power and influence themselves to make decisions for nutrition. So if we're going to move nutrition in India, globally, or in the UK where I live, it's going to be through alliances of people coming together, bringing their skills. The whole is greater than the sum of the parts, and that's the way that the Global Alliance for Improved Nutrition, GAIN, which is the organization that I lead, that's the way we work. We work in alliances of organizations and people. We're joined today by Dr. Brent Loken, who's also the co-author of the EAT-Lancet report. Welcome. Thank you very much. It's great to be here. Wonderful thing that you've presented today, the EAT-Lancet report. I'd like to ask you now to elaborate on the 2 goals in the EAT-Lancet report. Well, the 2 goals and 5 strategies, yeah, right? Yeah. So what we did within the EAT-Lancet report is we set 2 things. One is setting scientific targets for what a healthy diet is. I mean, if you ask 10 people in a room what a healthy diet is, you'll get 10 different opinions about what a healthy diet is. Be confused. Right. So we thought we have to bring global clarity to what a healthy diet actually is, right? So we set scientific targets for what a healthy diet is. And then sustainable food. There's so much confusion about what is sustainable food. Is it GMO foods? Is it local food? Is it organic food? What is it? So we also wanted to set scientific standards, targets for what sustainable food is. So those are the 2 goals that we set within this report. And the 5 strategies? Well, first is we need an international shift in what healthy diets. So we have to get international commitments to say, governments have to get on board to say people within our country should be eating healthy food, healthy, sustainable food. 2 is we need to focus on producing good food. There's been too much focus on just producing calories. It's like large quantities of food, and what we're saying is large quantities is not enough. We have to be producing healthy food for everybody. 3rd thing is we need to intensify how we produce our food. So every single square inch of land where we are producing food has to be done to the maximum. The 4th thing is we need to figure out how do we govern the land, how do we govern the forest, how do we do this international governance of all this land that we share on this planet with. And the last thing is we have to cut the food loss. We waste so much food. I mean, if you look at almost anywhere, if you're talking about a restaurant or a hotel or in your house, we're wasting way too much food. We're always wasting food, and always. Many people, billions of them, are not getting enough food to eat. And even over-consuming food is a waste of food. If you're eating more calories than what you need, that's actually a waste too. So what we're saying is we have to cut that by half. How do you look at climate playing a pivotal role in sustainable food, and how could we perhaps counter this? Well, the climate is changing. We all know that things are getting warmer. We can't predict the seasons any longer. The monsoons. Well, yes. I mean, we have developed as a species because the climate has been really stable. For the last 10,000 years, we haven't seen these shifts. But now we're starting to see this huge shift in climate where things are getting warmer. We're not able to predict when we're supposed to grow stuff. Are the rains coming or not coming? And that's going to impact a lot of us. And it's going to impact where we produce food, how much food we can grow. But the thing about it is, if we don't change what we eat, if we don't change the food system, then we will not be able to stay within the global target of 2 degrees Celsius. So if we take that global target seriously, we have to change what we eat. We have to fix this broken food system. Dr. Brent, one more question. How do you look at the solution of changing to vegetarian food and diet? Well,
the thing about the solution and the great thing about food is we can all do it. I mean, we all eat food, right? Like we all love food, you know, and everybody has an opinion about food. And I get asked all the time, what can I do as an individual to create change? You know, what is the single greatest thing if you're worried about climate change or saving orangutans or whatever it is? And it's hard to know what to do, but food is something you can have a direct impact on. You eat 3 times a day or more or less maybe, but every single time you eat, you can make that conscious choice about what you put on your plate. And that has a direct impact on health and a direct impact on the health of people and health of the planet. And that is such a powerful tool that each one of us has. That's one thing, but also governments have to step up. We have to get governments to start promoting healthier food through regulations or even incentives. legislation and implementation of the same. Absolutely, we can't just say it's all about the consumers. It has to be this top-down, bottom-up approach of let's tackle this from both sides. Dr. Brent, how can we tackle a problem like obesity? Well, part of it is, I think, you know, the same way that we got into this situation. I mean, you know, marketing is a huge tool. You know, we've put junk food on the markets, we market it, we've made unhealthy food sexy. And 2-minute solutions. Yeah, it's like quick and you know, we've got McDonald's is sexy and Coca-Cola and drink this stuff and you're gonna be cool. We could reverse engineer that and make healthy food as cool as unhealthy food, and that's one of the greatest tools that we can do we can adapt the same. Absolutely. We can reverse market and say, you know what, eat this stuff and this is cool, and I think we can do it. And now let's raise a toast to more healthy solutions for 1 billion+ Indians. On that note, many thanks for joining us. Thank you very much.